Akshay, sorry, Sanjay, did the interview date published? आई थिंक शायद आया है कुछ तो, बिकॉज पीपल मैंने सही कहीं सुना था, आई एम नॉट श्योर क्या आया कि नहीं आया। Because said, he's living and there, I think. Yeah, हम्म। most of them are actually started. Most of them, all of them are in online classes, institution I rounds. think a date is announced because one more person in our geography optional group, she was telling her interview is on 17th, this month only. So दिस मंथ। yeah, yeah. So अच्छा हाँ। I think dates. हाँ, is आर्यस की RBI, इंटरव्यू की डेट्स आई है ना, 26 जून से। RBI? आरएस Oh, okay. Also, RBI grade B, grade post B, for they also interview. Next month. I think end of this month or 20th of this month. Okay, so let's start now. Today we have to start the next unit. Okay. Just a minute. So I just posted the questions. एक बार question देख के we'll move on to the unit. Okay. So this is the next unit. In revised plan, today we'll start with the next unit. Okay. Status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions. Okay. आज का topic ये है. Along with this, we'll try to accomplish two thinkers, Kautilya and Buddha. Okay. हाँ, कौटिल्य एंड बुद्धा. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक में एंड ये सेकेंड टॉपिक जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स, एक्चुअली ये प्रोबेटिव के टॉपिक में आता है, बट बेस्ड ऑन विजन का जो भी फ्लो उसके साथ जा रहे हैं ना, तो दिस विल कम इन द सेम उनका वैम मटेरियल. तो एज अ सीक्वेंस मैंने ऐसे ही अरेंज किया है सो दैट फ्लो विल डोंट गेट डिस्टर्ब. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आज का टॉपिक. ओके, सो इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yeah. Okay. Okay. So just seeing today's topic. Okay. So if you see today's topic, questions के nature पहले समझ लेते हैं. तो today's topic is status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and public private institutions. Okay. So इसमें 13-14 में कुछ question आया था, but 15 में directly question started. Private public servants are likely to confront with the issue of conflict of interest. So direct conflict of interest से start हो गया. What do you understand by the term conflict of interest? How does it manifest in the decision by public servants? Again, if you see first part आ गया, second part आ गया, how does it manifest? And then if faced with conflict of interest situation, how would you solve it? Explain with examples. And all these three dimensions they have asked in for 10 marker. Okay. So all the three dimensions they have asked in for 10 marks. Again, that's a challenge in ethics probity wala section, wherein there'll be multiple dimensions of the question. So conflict of interest was first thing, and then 2016 mein you can also link this with Weber also. I want to just a minute. You can take this in Weber ka thinker ka topic also. Just a minute. Is everything fine, right? Audio, video? Yeah. Yes. Okay, I was facing some issue. Okay. Next was 2016. Max Weber said that it is not wise to apply the public administration the sort of moral and ethical norms we apply to the matters of conscience. So what we said, broadly remember about Max Weber, thoda bahut we can connect, but later we'll see in detail. It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. So whatever we discuss bureaucratic morality of the state, that may be different from what personal conscience. उस तरह का angle है. Critically analyze the statement. 10 marker, same thing. Okay. So again, first wala they will ask three sub dimensions, or it will be like a single quote which we must decipher and write on spot. And then 2017 mein again, if you see, discipline generally implies following the order and subordination. So they've taken one discipline aspect and they've made a question. However, it may be counterproductive for the organization. Again, two aspects of discipline: following the order and maybe counterproductive. So over discipline हो जाएगा तो भी issue है. So generally, again, a 10 marker. And then in the same year, without commonly shared
and widely entrenched moral values and obligations, neither the law nor democratic government nor even the market economy will function properly. So again, the need for values is emphasized here. So, what do you understand by this statement? Explain with illustrations in contemporary times. I think this question, even law, जो भी next हमारा topic है, we can take in that also, or just put it here, okay? And then this conflict of interest वाला they've repeated if you see. So, conflict of interest in public sector arises when three things: official duties, public interest, personal interest are taking priority one above the other. So whenever these three are in conflict, when one is placed over the other, so in that context conflict of interest arises. They are only giving the three cases. How can this conflict in administration be resolved? Again the same thing, the dimension is same, like conflict of interest will arise, and then how can this be resolved? So these two dimensions should be clear with us always. And then 2018 May, if you see, what is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by civil servants in public interest? Again, this is a very broad question. It can be answered with almost all the syllabus knowledge. Vijay, 1 second. Datta, please, unmute your mic. Okay, sorry. Huh. Okay. And then if you see the 2018 second question, again conflict of interest is almost measured 3 times they've asked. What is meant by conflict of interest? Illustrate with examples the difference between actual and potential conflict of interest. I think this everyone knows the Chanda Kochar case when it happened. So again, it also shows the importance how current affairs knowledge is also linked to the static knowledge. So again, repeated theme, conflict of interest. And then if you see here, it's a kind of case study type question they've asked in section A. Suppose the government of India is thinking of constructing a dam in mountain valley bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen circumstances, unforeseen contingencies? So if you see, they've taken kind of case study while a real situation and put us in a to solve using a policy. So again, linked to the dilemma wala thing, wherein we place different interest one above the other to solve the issue. So this kind of questions also will come in section A. And then in doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication. So this is one broad again dimension. We can do everything, but which is not expressly prohibited by clear implication. It may be by implication by law or something which is prohibited by code of conduct or something. So again, a broad statement which you must understand on spot and right. Examine the statement with suitable examples in the context of public servant discharging his or her duties. Right. So this is one thing. Repeat ho gaya. And last one was explain the process of resolving dilemmas. So I think dilemmas we saw how to resolve. The same thing they've asked just a full-fledged question. Explain the process of resolving ethical dilemmas in public administration. I think 2020 there was no question. So largely what we can say I think is there are some repeating themes. Like conflict of interest wala theme is almost getting repeated many times, and especially in the context of public service, because syllabus line starts with only this dimension: public service, civil service values. Okay, so ethical concerns, dilemmas, government and private. So this dimension is there, and thinkers, if there is any. Broadly, this is the what I feel. Anyone wants to add anything? Previous year question के बारे में? नहीं ना? Okay, so let us start today's. Okay, so from today, the VAM which we'll be using is ethics in administration, concerns and dilemmas. So if you see, broadly observe जो vision का overall framework है to cover this topic. They start with good governance, ethical governance, and then they move on to status. So which is the first topic of our status of ethical standards administration में, issues and dilemmas, the first topic. And then one is Indian administration they pick up. Other dimension is private or business administration. Again, in that issues with respect to all the three stakeholders. So I think broadly we'll get the context of all the questions UPSC is asking. And then ethical framework for conduct. This we are anyway reading with ARC, so revision ho jayega iske bhi. Majority I think are overlapping with ARC. I think till here we can complete today. Code of conduct is tomorrow's topic. So till I think page number 6 or 7 we have to complete today. Okay, so let us begin. And also related previous year questions. Okay, so quickly start karte hain. 9:32 hai. Okay, so I will start first. Okay,
So this document shall cover the following sections. Same thing: ethics in PubAd, status and problems, ethical concerns and dilemmas. So this is the first topic of today. This we will do tomorrow. So I'll start. And I was thinking one more thing also, that ये जो topic we're discussing ना, especially the last 2 units, overlap with governance. I was thinking कि end में I don't know whether GS2 governance we can push. Let us see afterwards. Okay. So I'll begin. Governance, good governance, and ethical governance. So governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. So this is standard, authentic, wala, all dimensions: economic, political, and administrative authority. So governance is government in action. Simply, you can say that also. Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. So I think Sanjay was giving example yesterday. Governance is one of the root cause of many problems, such as left-wing extremism in the country, tribal area mein. So all those things can be quoted as examples here. So jo bhi examples, if it strikes you, please keep on adding. Okay, you can interrupt me and add. So without good governance, no number of developmental schemes can bring improvements in the quality of life of citizens. So this is the same thing. Without good governance, हमारे पास जो भी schemes है, it will not be useful, because ultimately it will not reach the people. For example, I can remember one famous statement by Rajiv Gandhi in earlier times. I think उन्होंने बहुत बोला था कि for every 1 rupee spent by government, only he said ना only 15 paise or something will reach the last person. So it इसमें B.R. Ambedkar का भी कोट डाल सकते हैं. He said, however a good constitution may be, if those who are implementing it are not good, it would prove to be bad. But however bad a constitution may be, if those implementing are good, it would prove good. Correct. So it depends on the persons who are manning the institution, right? Right. So I think a good connection will be kar sakta hai. So on the contrary, if power of the state is abused, so power, if it is abused or exercised in a weak or improper way, those with least power in the society, that is the poor, will likely suffer. So if the power is abused, then the people with lowest power, least power, that is the poor, will suffer more. In a way, we can connect this to all levels, from international relations to rich versus poor to everything, even in the current pandemic. So broad context. So if you see, though a good governance is a dynamic concept, but it is largely said to have the elements of efficiency, economy, effectiveness, equity, transparency, accountability. I think वो standard diagram है ना good governance का. It is the same thing: efficiency, economy, effectiveness, equity, transparency, accountability. So which are essential for promoting prosperity for all. So these values, I think, should be always there in our mind. So if you see this infographic, ethical organization, it depends on ethical individuals. So they're taking broad as an organization as a context: individual, leadership, and organization structure. So if you see in individual, I think we read all these values. So we can link to all the earlier syllabus we read: integrity, honesty, which they should inspire trust, treat people right, fair play, high level of moral development. So at an individual level, whatever we have read, attitude, वगैरह, everything we can add, even though it's not given here. And then ethical leadership. I think there's a famous quote, na, character of an institution is reflected in its leader, or something like that. So ethical leadership becomes important. For example, role modeling, uphold ethical values in organization, communicate about ethics and values, rewarding ethical behavior. So as a leadership, how he treats good and bad things, that perspective, and swift discipline of unethical behavior. So if you see the question, discipline, wala try to connect wherever previous question, wherever is there, we must try to connect. Okay, a swift discipline of unethical behavior. So and then coming to organization structures and systems, it is the corporate culture, code of ethics, ethics committee, afternoon हमने पढ़ रहे थे ना, and chief ethics officer, ethics training, whistleblowing mechanisms. So this is part of a system overall. So when we talked about ethics infrastructure, if you remember workshop, I think 2, ethics infrastructure also talked about all these things majorly. So ethics organization, we should talk about individual level, leadership level, and pura organization ka level. And then moving on, now it's about ethical governance. So ethical governance, on the one hand, is a step ahead of good governance, right? In that it seeks to realize the certain universal desirable values and not merely virtues of administrative efficiency.
So as we saw in good governance, so these are the values they have given broadly: efficiency, economy, effectiveness, equity. But ethical governance is beyond this. I think एक video देख रहा था अनिल स्वरूप जी का. He was telling, sorry, Vinod Rai का. He was telling कि ethical governance is more than good governance in that because it brings an element of social consciousness governance में. It brings more equity, those aspects more. I mean, broadly ethical things it will bring out more. For example, they've given Government of India Act 1858 was also called as Act for Good Government of India, but it was intended for benefit of the British at the cost of Indians. So it was good government for them, but for us it was suffering. Therefore, what is good keeps changing with time and space. So this we know, right? Value keeps changing with time and space. It's the same thing. Hence, it is ethical governance that is needed. So ethical governance है, तो we can easily say कि ultimately it will benefit everyone. So if you see the key elements of ethical governance means governance based on certain values. So always value will be a strong premise, which is also good. So value होगा और वो good भी होगा. For example, probity, integrity, compassion, empathy, responsibility, social justice. So if you see all are syllabus words only, nothing new. So we must also learn to use syllabus words without which ethical issues can't be upheld. Right? And then key elements is first is elimination of corruption. It is not only a moral imperative but an economic necessity for a nation. So for a nation aspiring to catch up with the rest of the world. So they tell now there are some facts also which we have forgotten. I don't remember. I think there are some facts also which say that because of corruption, Indian economy, is potential reach नहीं कर रहा ऐसा कुछ. So those things we can always quote. The most important elements of ethical governance is to eliminate corruption and reduce bureaucratic delays. So red tape, whatever we say, should reduce bureaucratic delays. Should be rule of law, probity, and responsibility. Nothing new. So probity would ensure that sole purpose of administration is public interest, thereby devoid of any wrongdoing. Probity actually is a bigger concept. We will read in detail when we take that unit. Okay, so thereby devoid of any wrongdoing. So responsibility is not merely accountability. Ensures the inculcation of internal accountability. So this is even in today's context this is going on. Ensures inculcation of internal accountability for every act of omission or commission. So normally what we see is if we only complain if bureaucrat ने कुछ किया और वो गलत किया. But in today's context, even if he doesn't act, if he just sits on the file or something, that is also a biggest act of omission, and that will lead to many delays. So we must also include omission and commission wall aspects in the form of judgment based on one's conscience. So here he must make that decision. If this is attained, then there would be no question of corruption. So probity, responsibility, rule of law checks the arbitrariness in governance, right? Thereby reducing chances of misusing discretion. So I think the standard formula we saw, right, corruption ka, monopoly plus discretion minus accountability. So that also we can say. So this is about the general introduction. तो कोई start करेगा? मैं पढ़ लेता हूँ. Status of ethical standards in Indian administration. The Indian civil services suffer from strange paradoxes. First, poor self-actualization. That is, rigid adherence to procedure combines with the ready susceptibility to personal pressure and intervention. While a bureaucrat may give the appearance of being preoccupied and correctness and propriety, in practice he may be committing endless irregularities and improprieties. Second, one-size-fits-all approach. An apparent pursuit of the uniform application of absolute justice may contain glaring anomalies. It is curious reflection on their attitudes and thinking that Indian bureaucrats are willing to tolerate such contradictions between theory and practice. Right. Actually, if you see in the current context also, like going for national lockdown, all those things doesn't work because we need we don't one size fits all approach will not work for the large democracy or diversity because we have, right. So इसलिए they use the word fit to purpose approach. Whenever we come across this word, one size fits all approach, we can use the word fit to purpose instead of one size fits all. Okay. 2.1 sorry, ethical issues in Indian administration. First, excess of personal authority or a rank position.
Intentionally, officials make actions that are out of their position, responsibilities, and rights that finally makes damage to the interest of state or certain citizens. तो वही होगा ना, Second, abuse of power, same, right? second, negligence. A public official either does not perform his professional responsibilities or perform them in a delinquent manner, causing damage to the state or community. This is mostly because of the lack of interest that one has in one's duties and responsibilities. Right. So this we can link Third, to bureaucratic apathy to be. third, bribery. Bribery and corruption have come to become an acceptable part of the society as a necessary evil, greasing the wheels of the economy. Correct. Fourth, complacency replaces the hard work. Although there is a core of exceptionally hardworking, dedicated, and conscious officers, they stand today overwhelmingly outnumbered by the complacent, who are obsessed with status, rank, emoluments, and addicted to the habits of personal luxury and indolence. I think Anis Swarup ji के book में इसी line में he was telling ना. Fifth, psychology of evasion. When confronted with a difficult decision, the Indian bureaucrat seldom makes any attempt to tackle the problem with initiative and imagination. Instead, he will refer the matter to another department or make a series of unnecessary reference or subordinate to gain time. Red tapeism. Lack of problem solving issues, मतलब जो अपना जयशंकर भी बोलते हैं. Correct. Sixth, patronization. The post-retirement assignment of senior officers to regulatory bodies and other important posts is largely done on the patronage with no set guidelines. Correct. Seventh, administrative I secrecy. think जो भी appointments होते हैं ना, like tribunal का या कुछ, they keep telling ना कि only bureaucrats are heading those things. तो I think all those things we can connect here. हाँ, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद Correct. वही जो पॉलिटिकल नेक्सस सपोर्ट का होता है ना, Yes. क्रॉनिक कैपिटलिज्म टाइप शायद. एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी. Secrecy is the hallmark of One minute. bureaucracy. Yes. Yeah. साइकोलॉजी ऑफ इवेजन, ये जो है, तो उसमें एग्जाम्पल ऐसा ये हो सकता है क्या, जैसे अगर कोई रेप केसेस हो तो जब एफआईआर के लिए जाते हैं तो जनरली वो लोग मतलब हियर एंड देयर करते हैं कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो रूल्स ज्यादा फॉलो करना इम्पोर्टेंट समझते हैं. करेक्ट. यस, बोल सकते हैं ब्रॉडली. rather taking action. करेक्ट. तो उनके लिए दे विल थिंक दैट कि इट्स अ सर्विस फॉर देम बट ड्यूटी फॉर देम. दे थिंक कि कुछ चैरिटी कर रहे हैं, तो उस तरह का माइंडसेट आ जाता है. Yes. Unnecessary references, subordinate gain time. Yes. Broadly we can say, but specifically for this context, Yes. it is like delaying, red tapeism, उस तरह का context है. This is. हाँ, मतलब रूल्स Okay. फॉलो करना गलत नहीं है, मतलब वो रेड टेपिज्म वाला केस सही रहे. ठीक है. Administrative secrecy. Secrecy is the hallmark of bureaucracy. In the name of public interest, private interests are served while maintaining secrecy. Transparency, therefore, is one of the most vital virtue of ethical governance. Nepotism. The So practice इसलिए of nepotism. RTA वगैरह will become very important. Nepotism. The practice of nepotism, the appointment of relations and or friends to public positions, thereby ignoring the merit principle, may lead to downgrading the quality of public service. Correct. इसको वो साला सिस्टम बोलते हैं ना पॉलिटिकल साइंस. Correct. Lack of compassion, indifference towards the feelings or the convenience of individuals, and by an obsession with the binding and inflexible authority of departmental decisions. एक साला सिस्टम होता है ना, मतलब साला बोलते हैं ना वो Correct. टीवी का Correct. बाई करके. Correct. नेपोटिज्म. अंकल जस्ट सिंड्रोम होता है जुडिशरी में, जितना मुझे पता है. जुडिशरी बिगेस्ट वो है एक्चुअली सीक्रेसी वाला. Okay.
President's arrangements or forms, I think regardless judicial of how appointments हम always quote कर सकते हैं यहाँ पर. Although it is not so controversial, but quote कर सकते हैं हाँ. judicial appointments के जो issues है ना, judges appointing judges वाला thing. So at least कुछ उसमें reform हो सकता है. We can quote I think broadly. उसको सीक्रेसी में भी कोट कर सकते हैं ना ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी में. हाँ but I mean मैं broadly बोल रहा था administrative में. हाँ. Right. Lack of compassion, indifference towards the feelings or convenience of individuals, and by an obsession with binding and inflexibility authority of departmental decisions, precedents, arrangements, or forms, regardless of how badly or with what injustice they work in individual cases. Okay. Abuse of personal authority or rank position for private benefit. Intentionally, public officials may use the authority and facilities exercisable by virtue of holding a position and provided to make that exercise of power more effective. In the guise of public service for personal interest, it appears when leaking official information. It is usually the sensitive nature and disclosure of such information can lead to chaos, corrupt practices, or for some individuals, improper monetary gains. Leaking official information at a date prior to the public announcement, thereof is a violation of procedural prescriptions. Correct. जो भी पॉलिसीज होगा ना अगर लीक कर देंगे तो इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स को पता चल जाएगा वो दे कैन एक्ट. Insider trading. Performing administrative actions while ignoring the facts and without a just motive. So this is like objectivity भी नहीं है, facts नहीं है तो, right? Use of public technical means, cars, communications, premises in a public official's private interest. Inactivity causing damage for community. Inactivity, omission. So this is about status broadly they're telling. Okay, I think you can take rest now. Someone else can read. इसमें मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है. रिसेंटली मतलब आई थिंक 1 साल पहले की बात है. तो व्हाट वाज हैपनिंग के बीएसएफ का एक आईजीपी था, तो उसके ना बेटी की शादी थी. तो व्हाट ही डिड इज कि पूरे रास्ते में जितने भी उसके अंदर जितने भी जवान थे सबको उसने ना रोड के ऊपर खड़ा कर दिया था डायरेक्शन देने के लिए वेन्यू का. तो वो एक एग्जांपल हो सकता है. उसके बाद उसको सस्पेंड कर. ओके, मैरिज के लिए उसका कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, you're telling something? कौन? ओके सुनाई नहीं दे रहा था कुछ. मैं पढ़ दूं? ठीक है. So next we'll move to ethical dilemmas. Okay. Ethical dilemmas in Indian administration. Public servants find themselves in dilemma that include conflict between different values of public administration, such as efficiency versus accountability. Aspects of the code of conduct: accepting rewards or gifts for performance of duty, personal value versus those of senior or a government director. Okay. Professional ethics versus following an unjustified order by a superior or authority. Next step, blurred or competing accountabilities such as towards department or society. So Check yeah, infographic. same ना, वो they'll keep telling ना कि accountability towards public या towards society. लाठी चार्ज वगैरह that tell ना, orders to whom we have to pass, like IPS का dilemma standard. So we discussed this already. फिर dilemmas of civil servant. तो headings है इसकी administrative discretion, oath of secrecy versus transparency, politicization of bureaucracy, identity and its impact, pitfall of rigid hierarchy,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्ट डिस्क्रिशन में है, every civil servant has to select one path of action from several alternatives. It could well be that all the prescribed rules, regulation, and procedures are adhered to, but that the discretionary choice may be viewed as unethical or even corrupt. करेक्ट. एक्चुअली देयर इज अ स्टैंडर्ड आर्गुमेंट कि हम जितना भी चाहे ब्यूरोक्रेसी में डिस्क्रिशन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड. अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिशन उसके पास होता है. तो व्हेन ही डज सम एक्शन विद यूजिंग दैट डिस्क्रिशनरी पावर जो भी मिनिमम है, दैट शुड बी एथिकल. तो दैट इज द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट. Next है oath of secrecy versus transparency. So while on one hand a bureaucrat has to keep a sensitive information secret from press and media, but on the other hand he may be called out later for keeping the same, for violating transparency norms. Correct. I think this is the standard RTI में conflict whether information should be shared या secret. That's why RTI का एक section है which is misused. कोई section बोल सकता है RTI का section 8 ना? Section 8 I think जो they withhold information because of security clauses etc. ये अभी जो फैमिली मैन है ना सीरीज, उसमें भी सेम डिलेमा है. Okay. वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है. Correct. नेक्स्ट है politicization of bureaucracy. The political activity of public servants resulting in dividend loyalty on the part of those officials who sympathize with the views of a specific political party. Correct. So this also violates the impartiality principle, non-partisanship, political neutrality. All those things violate हो जाते हैं. Next है identity and its impact. The importance of caste determines the social outlook in India. An official's behavior, therefore, will also be culturally determined. In spite of his participation in a depersonalized system, his behavior must necessarily be culture-bound, or he risks social disapproval. Correct. I think this is a very important point, current context में, right? Everyone will be with some background, right? Some caste या some religion. So this is important to be depersonalized in this situation. Very complex. Right. Pitfalls of rigid hierarchy. The bureaucracy in India is so rigidly hierarchical that there is no mutual trust between government units or even employees within a particular department. Rather, mutual suspicion reigns, leading to authoritarianism amongst superiors, which in turn is destructive of any team spirit within the organization. Correct. So that is why if you see, whenever there is rigid hierarchy, ना, उतना flexible नहीं होते team, and work culture will be very rigid. We can always compare with the private sector, जो work culture and public work culture, where hierarchy is almost very less. If you see, सब लोग they will keep on freely, they will be communicating in office like Google work culture or anything. So that's not the case with public work culture, especially hierarchy बहुत होता है, तो suspicion, checks and balances वगैरह, that will keep on going. Right. Next है the set of fundamental principles or criteria that integrate the process of dealing with ethical dilemmas in public administration are democratic accountability of administration, the rule of law and the principle of legality, professional integrity, and responsiveness to civil society. This can be described as the ALIR, accountability, legality, integrity, responsiveness model of imperatives of ethical reasoning in public administration. Okay. ALIR model है, ठीक है. ALIR model, तो accountability, legality, okay. जनरल मॉडल है क्या? ओके. हाँ जनरल है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब है एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन प्राइवेट और बिजनेस इंस्टीट्यूशन. तो अभी हमने पब्लिक पढ़ा, राइट? सो दिस इज प्राइवेट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस. Business ethics is the predominant source of guidance in private or business institution. The philosophy may vary from organization to organization. However, fundamentals remains the same. Individuals often find themselves in a situation of conflicting desires.
Sometimes they have to choose among two rights or wrongs. For example, whether to leak information which is harmful to public interest but serves the interest of the private corporation. Likewise, other general ethical issues in private sector are discussed below. So, ethical issues of private sector in general are like favoritism, nepotism, and partisanship. So, this creates conflict of interest in appointments, especially in the family-run companies, to positions such as board of directors. स्टैंडर्ड है ना वो टाटा का, that it's happening from so many years, right? Next, integrity of the audit process. Companies have been found to fudge their balance sheets. It is the job of auditors to conduct proper audit and flag any violations, which they have failed to do in many instances. For example, DHFL case, at times even third-party auditors fail to highlight incongruence in the balance sheet. Correct. इसमें और कुछ examples we can add recently. I think many audit process they failed to highlight all the bank का frauds etc. right? PNB वगैरह. इसमें one that stands out is Price Waterhouse Cooper. उसने सत्यम कंप्यूटर्स था ना, तो that was I think स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा वो एक स्कैम कह सकते हैं लेट 2000s में. वो चीज है. ओके. एक्चुअली इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है कि उसका नेम भूल गया. सी जो भी ऑडिटर्स है ना, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, राइट? सो उनका फ्रॉम द ऑडिटर पर्सपेक्टिव कंपनी अपॉइंट करता है और वो कंपनी को ही ऑडिट रिपोर्ट देता है, राइट? सो इट्स लाइक फ्रॉम एन ऑडिटर इटसेल्फ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट हियर, क्योंकि ही इज ओनली अपॉइंटिंग हिज ओन ऑडिटर. ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है वो. ओके. पीएमओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, कोई एक अथॉरिटी है वो पीएमओ ऑफिशियल सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं. करेक्ट. इसलिए व्हेन एनी रिकमेंडेशंस दे गिव ना, दे टेल कि इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग अथॉरिटी शुड बी देयर, ऐसा कुछ, ताकि दैट आल्सो कैन रिमेन ट्रांसपेरेंट. आई थिंक इसमें आरबीआई ने रिसेंटली आरबीआई ने किया है ये चीज, या सेबी ने भी कर दिया कि जो ऑडिटर्स हैं उनकी भी इसके अंदर लायबिलिटी होगी कि अगर वो ऐसी चीज को नहीं एड्रेस कर रहे तो वो एक तरीका हो सकता है उसको सॉल्व करने का. करेक्ट. Because normally they are almost escaped in every situation if you see, right? Next, insider trading and manipulation of share prices. Excessive competition in the market often forces people for unethical practices. It is also when personal interests take precedence over the organizational and the shareholders' interest. Companies poise for insider information, and this may have debilitating results. Correct. Okay. Insider trading तो जानना पता है. इसमें मतलब लास्ट वाले जो वो डिस्कस करे थे ना, उसमें देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑडिटर शॉपिंग या ओपिनियन शॉपिंग. व्हाट दे डू इज दे विल हायर ओनली दोज ऑडिटर व्हिच विल गिव देम फेवरेबल रेटिंग्स. करेक्ट. तो ये भी चीज था. एक्चुअली अभी याद आया, इफ यू सी दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे ना, इकोनॉमिक सर्वे एक दिस ईयर का एक पूरा चैप्टर है और रेटिंग एजेंसी के ऊपर. इकोनॉमिक सर्वे इज ब्रॉडली ट्राइंग टू टेल कि जो भी रेटिंग एजेंसीज है दे आर बायस्ड टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज. हम जितना भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करे तो स्टिल आवर रेटिंग्स विल बी वेरी लेस. ऐसा प्रूव किया है इकोनॉमिक सर्वे ने वो पॉइंट. हाँ, इसलिए तो वो खुद की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाना है. हाँ. एक साथ काम कर रहा है ना. करेक्ट. तो ये एसपी और मूडीज तो हमेशा इंडियन कंपनीज को भी ऐसा कुछ नीचे ही रखती है. तो वो इकोनॉमिक सर्वे ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया दिस ईयर्स का. तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट हो सकता है इस ईयर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है कार्टेलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट्स. बिग conglomerates often to displace the new entrants from cartels having monopoly over the market. Such cartels have been seen in drug, communication, cement, etc. These cartels manipulate the market due to their hefty share. Price manipulation is one big impact of the same. तो इसका तो एग्जांपल आई थिंक सबको पता है, राइट? बट थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं.
Anyone wants to add? वो सबको पता है, वो वाला तो बता दे। जियो बोल रहे थे ना सब लोग। ओहो, ये हुआ, हाँ ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आई थिंक अभी भी इफ यू सी इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ना, ड्रग के लिए जो भी बिग ब्रांडेड एमएनसीज हैं, दे विल डू दिस प्रैक्टिस आई थिंक, स्पेशली इन द पेटेंट के इनिशियल पीरियड में। हाँ, इसमें आई थिंक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को भी ले सकते हो। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन के मतलब गूगल स्टार्टेड आउट एज एन ओएस ओनली, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस टाइम क्या था, जब इंटरनेट एक्सप्लोर मतलब वेब ब्राउजर्स का कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स थे, जैसे कि नेटस्केप वगैरह वगैरह, था। तो इनिशियली दे डिड नॉट परस्यू, माइक्रोसॉफ्ट ने परस्यू नहीं किया था अपना खुद का वेब ब्राउजर बना, बट जब उसको देखा कि ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो देन दे वेंट आफ्टर इट, और फिर अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर बना के जितने भी स्टार्टअप्स थे उन सबको साइड कर दिया एक ही बारे में। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि हाउ दे आर मिसयूजिंग देयर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस। Correct. So they try to enter into every field, na, once they achieve a certain position. करेक्ट। And if you see recently the corporate banking वाला जो debate चल रहा था इकोनॉमी में, I think वो यही था, right? Broadly. Like public sector banks के लिए? नहीं, corporates owning the banks, ऐसा कुछ corporate हाँ। banking, that debate was going वो on. आरबीआई ने एक मतलब कमिटी ने, आरबीआई के अंडर एक सब कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। करेक्ट। वो उसको अपन मोनोपोली बोलेंगे क्या? मतलब एक सेक्टर में अच्छा है फिर बाकी सेक्टर में जाना भी उसको मोनोपोली थोड़ी बोलेंगे। मतलब अगर जो बाय लॉज के अकॉर्डिंग काम करेगा तो मोनोपोली नहीं बोलेंगे। व्हाट संजय इज ट्राइंग टू टेल इज कि वो जब मोनोपोली पोजीशन रीच होएगा ना, तो वो मिसयूज करेगा बाकी उसका पोजीशन, ऐसा बोल रहा। Once you reach that monopoly position, power इतना बढ़ जाता है कि they are trying to misuse in every area, सारे areas में by putting their foot, right? Okay. आगे बढ़ती हूँ. Lobbying with the government for favorable policies. Lobbying in some countries is ethical. India, there is no law which defines lobbying. Defense contracts are often heated topics for the lobbying angles involved in the same. Lobbying in a regulated manner is often recommended by experts. Correct. यानी यूएस में है क्या, एथिकल है क्या यूएस में? पता नहीं मुझे। हाँ, करेक्ट, एथिकल है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनको लॉबिंग करते हैं, तो देयर इट इज ऑफिशियल। इंडिया में कोई गाइडलाइन नहीं है उसके ऊपर। फिक्की वगैरह आई थिंक ये हाँ वो सब लॉबिंग है ना जो भी, बट आई डोंट नो क्या बोल रहा है किस एंगल में। ठीक है। यूएस में फाइनेंशियल लॉबिंग शायद, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो अपने पॉलिसीज पास कराने के लिए बहुत लॉबी करते हैं। करेक्ट। वो तो इंडिया में भी होता है, बट आई थिंक फाइनेंशियली देयर इज नो ऑफिशियल रूट इन इंडिया कि भाई पैसा देके ऐसा करवा लो। यूएस में इंडिया में कोई लॉ नहीं है इसके लिए, इंडिया में कोई लॉ नहीं है। लाइक कॉर्पोरेट्स जो है वो पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में कोई लॉ नहीं है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, या कोई वो नहीं है कि पब्लिकली वो डिक्लेयर करते हो कि हम इस कंपनी ने हमें सपोर्ट किया, ऐसा कुछ। तो हाँ, जैसे अगर एक यूएसए का एग्जांपल देना तो बहुत इतना स्ट्रांग आप समझ सकते हो कि डिस्पाइट डेली बेसिस पे गन वायलेंस होता है, डेली बेसिस पे आप सुनते हो गन वायलेंस हो रहा है, लेकिन गन्स को बैन नहीं कर रहे वो लोग। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पे जो नेशनल राइफल एसोसिएशन करके एक बॉडी है, दे आर हेवीली फंडिंग दोस पॉलिटिशियन हु मेक द लॉज। तो उनकी वजह से वो कभी ये गन लॉज को जो है वो रैशनलाइज नहीं कर पाते। ट्रू, गुड एग्जांपल। नेक्स्ट है oligopoly and monopoly. For example, communication sector is suffering from monopoly of few big conglomerates. The price wars have displaced many players from the market. Burning money to replace competitors is an unethical practice and Competition Commission in India regulates it. CCI. ठीक है। Okay. ठीक है। You can take Rashna. So कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। Ethical issues of employers. Favoritism. This means that the employer may favor a particular person
with regard to promotions and bonuses, and evidently neglect other eligible employees. This conduct is considered highly unethical on the part of employer. Correct. So this may please link to society also, right? The woman wala issue, a glass ceiling effect, all those things can be linked here. Glass ceiling, pink collar jobs. Okay. The Sexual Harassment at Workplace. It is not legal, ethical, or moral, whether it is workplace or out of it. Harassing an employee sexually or refraining from taking action against those who are involved in such offenses is strictly forbidden. Despite having laws, most of the companies do not have internal committees to address the complaints. Correct. I think recently जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें they made it mandatory कि they have to submit to Recently, Vijay, you heard about the recent event in McDonald's? McDonald, no. Okay, actually, every company corporate need some kind of cell. I mean, for sexual against the sexual harassment. Actually, the cell is actually that cell is working, but the members are all are men. Oh, correct. So the incident is just one of the employees just contacted them and harassment, especially by the manager. They completely neglect, and she go to social media and complained about the McDonald. Actually, then after she's bullied. Okay, by the same company. So what we said that the protector is going to predator. Correct. Actually, I'm not sure. In the Sexual Harassment Act, I think in the Internal Complaints Committee, there has to be one woman member. I think it's a mandatory provision. I mean, having one woman member, right? Yes. बट अगर वुमेन है ही नहीं तो फिर मेल ही होना पड़ेगा ना. करेक्ट, वो भी है. ओके, एक बार वो रिवाइज करेंगे. कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं तो आपके पास वुमेन भी रखना होता है. मतलब जो जो कंपनीज है वो ले भी तो रही है वुमेन को इजीली, मतलब बिग कंपनीज में तो बिग कंपनीज में देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो छोटी कंपनीज होती है ना वहाँ यू सी के वहाँ पे नहीं. क्राइटेरिया सेट कर रखा है उन्होंने कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं तो आपके पास इतनी होनी है. You have to be I think there is a recent one. According to that, it's 50 or 70 that number. It may be one or two, one maybe a person. They are appointing maybe a person. Okay. For that particular purpose, and they have to report. I mean, if you are an employee in a bank, okay, just imagine you are a bureaucrat, and there are less than 50 members in that particular office, but you are in charge, actually. So you have to report to the manager directly, or you can report to the higher level. But most of the cases, because of the biasness, that cell is not working. Correct. Okay. ठीक है, कंफर्म करके बता देना. बाद में मैं वो एक्ट का प्रोविजन पोस्ट कर दूंगा. आई थिंक उसमें सब रिवीजन हो जाएगा. Hire and fire culture. Terminating an employee without any notice. In some cases, for reasons like budget management, companies offer mass retrenchment to reduce the number of employees. Such steps should be undertaken after prior indications and notice of at least a month or two, so that the person can find another job. Gig economy, platform workers. Correct. Gig economy, platform workers. I think ऐसा कुछ प्रोविजन है ना 10 दिन पहले ऐसा कुछ नोटिस देना. 1 month. I think 1 month. There is a recent one. I think 1 month. But if you 1 or 3 months, because for platform workers it may be 1 month. For there's a particular one, and others for 3 months or something. 1 or 3, I'm sure. Between this. Yeah, Hari, but if you see currently government is operating on the principle of fixed term employment, right? They have opened it to all sectors where hire and fire. If you see now, general debate is they've made hire and fire easy, right? So I mean, I'm telling something contrary to this point. It also issue in the ease of doing business.
Because why the companies in India, some companies especially they are foreign, they want business in India. There's a issue of hire and fire Correct. because of the overprotectiveness. Yes, yes. Right. Next है general neutrality. To develop gender neutral architecture in organizations is another ethical issue. Organizations are often found to be insensitive and partial. Some organizations hire less women due to maternity leaves and other gender associated prejudices. Various studies have found that despite having better leadership skills, women face glass ceilings within the organization. Women are considered to be less productive. Correct. So this is general debate about women across all society. Okay. Equal pay, equal work time. I mean, there's a report from an European think tank group. Okay, they said that in a even higher, I mean, echelon, or like the groups like Pepsi or something. Actually, they said that okay, we are respecting human equality, but there's a recent report, the Indian report, shown that if the employee work at least for 6 hours or 8 hours, the male employee get more. Correct. Correct. Even the same work, same condition, same, I mean, difficulties. See, still, I mean, those guys are telling, those white guys are telling that we are respect equality, but at the same time they are denying. Correct. Correct. I think like a few days back we were discussing in DPSP afternoon Equal Remuneration Act. So that provision we can always quote. I mean gender gap economics. Okay. Last one complete कर दो ना इसको. Akshay. Just a second. हाँ. Okay. Next है accessibility. Organizational infrastructure should be accessible to all, including disabled. Most of the organizations lack sensitivity and awareness about disabled. Okay. So if you see broadly, the suggestions which they have given is in the context of overall. So private in general, if you see favoritism, nepotism, integrity of audit process, insider trading, cartelization, low monopoly thing, oligopoly, monopoly, and lobbying for government policies. So private linking to government एक dimension आ रहा है, and within private also some dimensions are here. And then from employer's perspective, the same thing, a gender angle, hire and fire culture, sexual harassment. Again, if you see women angle, they've given almost 2 points directly: gender and sexual harassment at workplace. And then favoritism एक broad idea है. ठीक है. Okay. So this is about broad to. Next is about employees. Okay, employees from employees' perspective. Ethical issues of employees. The employees isn't. कोई पढ़ेगा क्या? I think you are starting now, no? पढ़ो. जी पढ़ रहे ना. Sorry पढ़िए. पढ़ लूं? ठीक है. I think. हाँ women empowerment पढ़ लीजिए. ग्लास सीलिंग इफेक्ट आ रहा है. अक्षय सर कंप्लेन कर रहे हैं. अक्षय सर को पढ़ने दो. ठीक है. ठीक है. The employees Justice finally delivered. Yes. The employees in an organization may fall prey to many unethical practices, knowingly and unknowingly. Some of the most important ethical issues that employees may face are as follow. Work ethics है पहला. Any and every organization has some work culture and employees there follow some work ethics. Some of the important values which are punctuality, proactive communication, documentation, upholding the dignity of fellow employees, regularity. Any breach of these values is an ethical concern. Example, taking excessive leave beyond allowed number is a breach of ethical code. It not only leads to losses for the company, but also brings the employee a bad name. Correct. So we must try to connect with both the angles. Employee के लिए भी कुछ negative होगा और employer को भी, right? So 2 points will generate in that. Okay. तो वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का. Like for example, we can link punctuality अगर नहीं होगा तो लेट आएगा या कुछ वर्क प्रोडक्टिविटी कंप्लीट नहीं करेगा. So overall efficiency डाउन हो जाएगा.
Okay. Next is breach of rules and regulations of the company. Accepting terms and conditions are usually done as a part of joining procedure. Violating any of these rules may lead to undesirable issues between the company and employee. Example, failing to maintain the privacy policy of the company is sort of breaking of rules. Any examples on this? Same. WikiLeaks. I Correct. mean, WikiLeaks. yeah, most of the some employees of the particular company, one day they fired. They actually at the same time they reveal some kind of secrecy. It may be a trade secret. You know, in the case of KFC. Correct. Even the whatever we discussed, na, insider trading, all these things are the same thing only, right? Hmm. Yeah, yeah. Right. Okay. At the same time, Next there may one be a is whistleblower too. Yeah. correct. I give an example. Okay, it actually it happened in Finland or I think no in Germany. I say it's a what it's called livestock farming company, and they said and they have a lot of chicken farms too. On particular farm, we know in 2050 there's a video emerged. A lot of guys are actually and inhuman activities towards those chickens, just wrapping them. It's actually by a particular employee who is fired then after this particular incident. Actually, he spread that video. Please check in the video YouTube. Then actually they are in the live. Just I mean they are just live. Okay, live situation. Just scrapping. Just this just whatever we call that. It's killing without killing. I mean, broadly, you're telling Okay. about animal ethics in that sense, no? Yeah, animal ethics is actually that particular employee because of his some kind of what I mean. It's kind of ethics that relieved that particular situation, and the company said, apologize and even dismiss those guys. Okay. I mean, but what is the breach here you're trying to tell? I said breach the same because of it. One we can say maybe an ethics, maybe an revenge, but at the same time the company, an employee who is said, relieve the real situation there. Okay. Right. Okay, next is misuse of resources. Utilization of organizational resources to fulfill personal needs is unethical. Example, making unnecessary phone calls at the company's cost. Another example, some employees pocket tools and stationery such as staplers, pins, papers, etc. to use them at home. Any positive examples about this? Akshay, Misuse, one of my friend. Okay, मिसयूज के साथ पॉजिटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव कैसे How? होगा? नहीं पॉजिटिव है ना, मिसयूज नहीं करने वाले, मतलब जैसे आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री का मैंने सुना था कि जब वो कैंडल का सुना था मैंने, ऑफिशियल वर्क करने के लिए ऑफिस वाली कैंडल, घर का काम करने के लिए ऐसा, पर्सनल काम के लिए पर्सनल कैंडल, ऐसा Oh, कुछ. ऐसा. Good. एनी अदर एग्जांपल लाइक दिस? काफी है यार. कार का कह सकते हो यार. Official by those, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, तो उनका भी वही सीन था ना. उनको हर काम के लिए, हाँ फिनलैंड वाला तो अभी रिसेंट केस है, उनको भी वही कुछ फैसिलिटीज जैसे दिए गए थे और शायद नहीं वो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए. नहीं सॉरी और एक एग्जांपल है, आई विल टेक्स्ट. एपीजे अब्दुल कलाम. वो तो बोबड़े थे ना. हाँ वही. ना बोबड़े से पहले वो भी थे और एक प्रेसिडेंट थे. शाश्वत ये रिकॉर्ड हो रहा है. इसलिए तो नहीं बताया. Justice संस्कारी है भाई. ठीक है ऑब्जेक्टिवली बोलो, नो प्रॉब्लम. हाँ ओके. हाँ, next is using office hours for private work. Because employees tend to spend so much of their weekday hours on the job, they often are tempted to conduct personal business on company time. Example, this can include setting up doctor's appointment on company's phone lines, etc. I think ठीक है. current context में if you see ना, the work from home culture जो भी चल रहा है, it is so happening कि
वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम वर्क फ्रॉम होम 24/7, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन दिल बी वर्किंग होल डे, ऐसा कुछ. ओके, तो आई मीन सम थिंग्स लाइक दीज थिंग्स वी मस्ट आल्सो इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई एंड अप्लाई करना. ओके. Correct. Next is working for multiple organizations. Companies usually prohibit employees to work in more than one organization, especially in a competing company where confidential information may be used. This also questions the loyalty one has for employer. इसका एग्जांपल जो मतलब आई कैन द मोर टॉप ऑफ माय माइंड जो है सिविल सर्वेंट्स वर्किंग इन कोचिंग इंडस्ट्री. दिस इज वेरी रैम्पेंट. Akshay, recent one. ऐसे बोल सकते हो. हेलो, ऐसे बोल सकते हो क्या? बोलो ना. हाँ गलत है ना. इट्स against it, but don't you think it is unwise to quote this example? In exam we cannot quote. I'm just Come on. No issue. We are not formals. Okay. Okay. Illegal, completely illegal, no? No, I understand. We will not name anybody. We'll not name anybody. We'll just say कि unethical है ये चीज. I think in civil servant का उनका code of maybe here, right, mentioned है. Code of ethics. I mean, it's maybe voluntary. It's a free of cost. You can do. Correct. But it's not a paid one. Yes. Okay, that is the clause. I mean, that particular clause everyone is utilizing. If there's someone is actually, I mean, teaching somewhere in a college institute, they said that we are just on voluntary one. I'm not. I don't pay a single penny. Okay. If there's any provision which remember specifically, तो please group में post करिए so that we can write the provision in answer. Otherwise, it will be general talk. हाँ. Correct. एक कोई लॉ भी तो है जिसमें जो अपने प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पर जाकर भी अपनी सर्विस दे सकते हैं वॉलेंटरी. हाँ, एक बहुत बड़ा स्कीम भी था, राइट? एजुकेशन में आता है ना, कौन सा एक्ट है कौन सा? Can be called private practice of doctors. Yeah. That could be an example. Yes, that is also not allowed. Correct. Actually, Akshay, it's not allowed. I mean, in some sense, especially in our state, that is allowed. But there are some associations. They tell that actually there's a modified regulation say here. But I would like to add, sometimes what happens is they see them in the government hospitals and they refer them to come to their own private clinics. Correct. So that is Kafil Khan. Actually, that particular inquiry, they said that he's preferring those patients to his clinic, his wife's clinic. And you have heard about, I don't know if someone belongs to KV, they have clear-cut rules that you are not allowed to teach if you are outside a school campus. तो रेजिडेंशियल होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? Sorry? मतलब रेजिडेंशियल टीचर्स होते हैं केवी में? नहीं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना अलाउड नहीं होता है. नहीं, गवर्नमेंट की तो बात नहीं, बट केबी का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. मतलब इनका ये सीन रहता है कि दे आर नॉट अलाउड. Akshay, in Madhya Pradesh, there's an incident. Okay, I think 2018, there's a teacher who does not give internal marks to a particular student. Why? I mean, why they question this? She said that they are not joining. I mean, she replied to that particular student, you don't join my institute. That's why I don't give. I mean, your internal marks. Actually, I was trying to tell this example only. Government school में जो भी teachers होते हैं, they will not teach properly in school. They'll tell come and join my coaching. So doctors, education, all these things will be taught. You could have heard about that CC thing. CC, if someone belongs to CBSE, but back in 2012 or 11, the formative assessment thing, they have basically that to improve that means in क्या बोलते हैं, वो जो टीचर को बढ़ावा दिया कि भाई ट्यूशन कर लो, क्योंकि मार्क्स उनके हाथों में ही तो थे. ओके. तो नेक्स्ट है टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क.
Taking the credit of success and disowning the blame for failure is a common unethical practice that leaders do. Example, Professor Satish Dhawan, the then chairman of ISRO, demonstrated this quality when accepting the failure of first satellite launch vehicle mission by a team led by Dr. APJ Abdul Kalam. However, such ethical traits have been found missing in many organizations. Correct. Okay, तो उल्टा एग्जांपल दिया उन्होंने. हाँ, I mean yesterday only quote था ना कि a leader will take हाँ. less credit for his success and more for his blame. That is the quality of a leader. इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी. Whenever he wins a World Cup or any cup, basically, he gives that trophy to youngsters and they are like who are in front of the media and all that. वो पीछे रहता है हमेशा. वो पीछे जाके खड़ा हो जाता है. अनिल स्वरूप जी ने भी दिया था ना अपना एक, उनका डीएम ने क्रेडिट लिया था, गोल्ड मेडल जीते थे वो. Exactly. तो भी अनएथिकल. Yes. Correct. Good. Okay. Next, harassing behavior. Employees often don't know what to do if they see one of their co-workers harassing another employee, either mentally, sexually, or physically. Employees may worry for their jobs if they attempt to report a superior for harassment. They may fret that they will be labeled a troublemaker if they report co-worker who display inappropriate behavior towards other employees. तो यूपीएससी का जो भी केस स्टडी पूछता है ना, इस डायरेक्शन में आई थिंक 2-3 केस स्टडी पूछ लिया यूपीएससी ने. बहुत आए इसमें क्वेश्चन वुमन के. करेक्ट. ठीक है, तो आई थिंक तो ऊपर लेना है एक बार जस्ट. हाँ, एट अ ग्लांस देख लेंगे. हाँ, समराइज कर दो. ठीक है. एट अ ग्लांस तो बेसिकली ये है कि वर्क एथिक्स एंड वर्क कल्चर, ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस, यूजिंग ऑफिस आवर्स फॉर प्राइवेट वर्क, वर्किंग फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, जहां पे अपन ने सतीश धवन का एंड एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल देखा, हैरेसिंग बिहेवियर. करेक्ट. एक्चुअली इसमें आई जस्ट वांट टू आस्क, थोड़ा सोचिए, इफ सी ना फर्स्ट लाइन में दे हैव रिटन ही एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन मे फॉल प्रे टू मेनी अनएथिकल प्रैक्टिस, नोइंगली और अननोइंगली लिखा है. ओके, आई थिंक मेजॉरिटी हियर आर लाइक नोइंगली किया है, जानबूझ के किया है. अननोइंगली का कुछ एग्जांपल किसी को याद आ रहा है? मुझे फिर से थोड़ा रिपीट कीजिएगा, सुना नहीं दिया. ओके, मैं जस्ट पूछ रहा था कि they have mentioned is the employees in organization may fall prey to many unethical practices knowingly or unknowingly बोला है. Okay, so whatever we discussed here ना, majority of this is like जो भी knowingly हो रहा है, वो वर्क कल्चर लेट आ रहा है, कुछ ऐसा is breaching everything, so this is like knowingly happening. unknowingly भी हो सकता है is what the other dimension. so इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? अगर हॉस्पिटल केस होता है तो आई थिंक अननोइंगली तो इट कैन हैपन इन केस उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इनमें से किसी भी केस में हो सकता है कि लेट्स से इनसाइडर ट्रेडिंग है, अगर उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो अननोइंगली होगा ब्रीच ऑफ दैट. आई थिंक इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट होना चाहिए. ओके, अननोइंगली. ठीक है, तो वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन वी कैन थिंक ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक आज का यही तक था. तो टुमारो इज कोड ऑफ कंडक्ट, तो देखिए जल्दी से विल फिनिश द रिमेनिंग थिंग्स. तो कम टू वर्कशॉप नंबर 5. ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. डायरेक्ट सिलेबस का लाइन भी है करप्शन. ओके, तो आई विल रीड दिस. ओके, सो वर्कशॉप 5 इज व्हाट specific steps can be taken to reduce the incentives for corruption. तो corruption है, तो reduce the incentive for corruption के लिए क्या करना है? Okay, shall we brainstorm this once? Oh sure. ठीक है, मतलब एक तो हो गया कि यार ऑफिशियली करप्शन का मतलब है ना इंसेंटिवाइज कर दो. आई मीन नॉट करप्शन, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे वर्क को इंसेंटिवाइज कर दो ना. जैसे आईआरएस ऑफिसर को होता है, दे गेट सम कमीशन व्हेन दे earn extra money from corrupt people, something like that. मतलब क्या बोलेंगे उसको, लीगलाइज कर दो काइंड ऑफ. हाँ, बेसिकली जो भी एटीट्यूड में हम पढ़े थे, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. नाइस.
करेक्ट। बाकी पॉइंट्स बताओ। सेम एटीट्यूड में यही पढ़ा था ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थियरी में, दे मस्ट रिवॉर्ड द ऑनेस्ट बिहेवियर एंड जो भी दिस डिविएंट बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। तो एटीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट। करेक्ट करेक्ट। एनी अदर? ये सब लेकिन शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। मतलब अच्छा, एक और वही चीज ना है कि नो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन बोल सकते हैं, मतलब कि एकदम छोटा सा छोटा करप्शन जो है 100 रुपए। who is involved in the corrupt practices. करेक्ट। वी कैन आल्सो कोट योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के जो स्टेप लिया था बीच में। कौन सा? अरे मतलब वो पब्लिकली नहीं लगाए थे। नहीं वो गलत चीज है। That was against, मतलब प्री जुडिशियल था और नहीं वो प्राइवेसी के अगेंस्ट है वो, बट सम वेरिएंट ऑफ इट कैन बी डन, शुड बी डन ना। हाँ तो मतलब अब करप्ट ऑफिसर का अगर लिस्ट लगा दे पूरा महाराष्ट्र का तो भाई अच्छी बात है ना, वो तो मतलब नहीं, बट एक चीज एड्रेस करने वाली है, Corruption is more of a societal problem. ठीक है, ये भी पर्सपेक्टिव है। Unless we are accepting in the society. बट अभी हम ना एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि उधर कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, कैशलेस इकोनॉमी लेके आओ, डिजिटलाइजेशन करो, ये सारी चीजें। करेक्ट करेक्ट। एआरसी में भी राइट। हाँ, एक और है रिड्यूस राइट। हाँ करेक्ट, फेसलेस वाला, मतलब रिड्यूस द डिस्टेंस या फिर क्या बोलते हैं उसको। हाँ, डायरेक्ट इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस। हाँ, ह्यूमन इंटरफेस कम कर दो, रिड्यूस कर दो। प्रोपोर्शनल अलाउंस या सैलरी अकॉर्डिंग टू द सर्विस, मतलब जिस लेवल की जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस। ये तो बिगेस्ट सिंगापुर का यही एग्जांपल है वर्ल्ड के लिए। दे हैव वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज, ऐसा कुछ बोलते हैं। सो दैट अच्छी सैलरी दोगी तो मतलब ऑलवेज सिंगापुर का एग्जांपल दे सैलरी में। राइट। भी कितना सैलरी है? 60-70 कुछ। जाके पता लगे। नहीं, अभी तो 16 कोड ऑफ एथिक्स एक और है इंप्लीमेंट करना। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट आई थिंक द एनफोर्सेबल बनाओ। मोर जितने ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जितने प्रोसीजर है उनको जितना माइन्यूटली कवर किया जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लूप होल्स होते हैं तो चांसेस ऑफ द करप्शन इज मोर। तो हर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को मतलब डिफाइन करना, ऑल्दो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये जितना ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, उसको जितना भी वो कर दो, कोडेड कर दो। यस, ऑलवेज ना। जब हम करप्शन का फॉर्मूला देखते हैं वो 3 पॉइंट आ जाता है डायरेक्टली। डिस्क्रिशन कम करो, मोनोपोली कम करो, पावर कम करो उसके हाथ में, और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस काइंड ऑफ थिंग, ऑडिट, विजिलेंस। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस कुछ तो है ना, M+D-। हाँ, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। तो ये करप्शन का रीजन है। तो मोनोपोली को कम करना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन हिज हैंड शुड रिड्यूस, डिस्क्रिशन आल्सो कम होना चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह, ऑडिट, विजिल ब्लोइंग, वो वाला पॉइंट आ जाएगा। मोनोपोली में ये होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, जितना ज्यादा लोकल गवर्नमेंट किया, फिर उससे नीचे हायर केस में थोड़ी पावर सबके पास थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऊपर के जो लोग होते हैं मतलब इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट्स, उससे पावर काफी सेंट्रलाइज्ड होती है, सो डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा उनके पास होती है। ये जो पॉइंट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमने बोला अभी, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फेलियर बोलते हैं ना, दैट वन ऑफ द रीजन कंसीडर्ड इज डीएम के पास बहुत पावर है उसके हाथ में। He has not devolved it to the local level. In fact, the Gram Pradhan have to go to the main district, to the BDO or to the level of the SDM and DM to sign the papers to get the approval done. That is a problem. Correct. Okay. I think एक होता है ना, टाइम फ्रेम डिसाइड करना होता है, कोई डिसीजन लेने के लिए इतना टाइम करना है। अदरवाइज मतलब करप्शन तभी बढ़ता है जब आप लॉन्ग टाइम लेते हो कोई डिसीजन लेने में। तो फिर वहां पर आपको फिर थोड़ा ओके गुड वन। एक्चुअली ये भी अच्छा है। एक एग्जांपल याद आया, तमिलनाडु में एक आईएएस ऑफिसर था, बहुत फेमस है वो भी, नाम याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बोलूंगा। व्हाट ही सेड वाज, ये जो टाइम जो तुमने बोला ना, ही गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। ही सेड कि ई गवर्नेंस यूज करके ये फाइल मूवमेंट को ऑटोमेट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल, इतना टाइम फाइल इस ऑफिसर के पास जाएगा, और अगर उसने एक्ट नहीं किया
तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो, लाइक एक्ट ऑफ फॉर्मेशन और कमीशन ऐसा कुछ, तो टाइम का प्रेशर डाल दो ऐसा कुछ। ही वॉज टेलिंग यूजिंग ई गवर्नेंस एंड ही टोल्ड कि मैंने वो किया था तमिलनाडु में। ही वॉज टेलिंग हाँ एक्चुअली ई फाइलिंग e-filing is the best way because there would be no excuse then again the time is taking more, मतलब ज्यादा टाइम लग गया ऐसा तो मुझे लगता है एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि जब बोलते हैं हमारे पास फाइल नहीं पहुंची, हमने साइन नहीं किया, तो ई फाइलिंग से होगा कि तुरंत फाइल पहुंच गया, आपको करना ही है, टाइम उसमें ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। हाँ एक्चुअली जो राइट टू सर्विस एक एक्ट था, आई थिंक मलेशिया में है, वो फेमस है, राइट टू सर्विस एक्ट बोलते हैं उसको। आई मीन दे मस्ट एक्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम में। आई मीन कर्नाटका में भी एक स्कीम था सकाला कुछ, इफ दे डोंट एक्ट इन दैट टाइम ना, तो दे शुड बी फाइन, ऐसा कुछ है रिवर्स में। ओके तो पढ़ लेंगे इसको। ओके काफ़ी सारा पॉइंट्स हो गया। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर करप्शन, तो जस्ट see how they are structuring the points. Okay, the manner in which the laws are implemented, so laws से start करते हैं, laws are implemented needs to be restructured. Knowledge about the laws among citizens has to be dealt to bring transparency. तो knowledge of laws citizen के पास होना चाहिए। if you see many people today also ground level में law का awareness नहीं होता है, तो इसलिए bureaucrats और जो भी they are in power they'll abuse the law, ऐसा हो सकता है। ट्रैफिक जो भी बेसिक लॉस है। एंड देन moral deprivation is a larger perspective and increased consumerism should be addressed. तो ये पूरा का पूरा ब्रॉड कल्चर का इशू हो गया जो भी। आई थिंक गांधी का सेवन सीन्स में भी एक है ना कोई, तो कंज्यूमरिज्म ऐसा कुछ, तो मतलब ग्रीडीनेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं ना सेवन सीन्स के अंदर। वेल्थ विदाउट वर्क है एक, हाँ विदाउट प्रिंसिपल करके था ना, वेल्थ विदाउट वर्क, अच्छा पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल भी था। वो हम पहले अपन डिस्कस कर रहे थे ना अनएथिकल वाला केस, तो वो फर्स्ट पॉइंट से भी आ जाएगा जो संजय बोल रहे थे कि लॉज की नॉलेज नहीं हो। बिजनेस विदाउट एथिक्स था वो सर। बिजनेस विदाउट मॉरलिटी एथिक्स, हाँ वो भी है। ओके तो मॉरल डिप्राइवेशन बोल रहे थे कि सॉरी कुछ बोल रहे थे गौरव। हाँ मतलब वो फर्स्ट पॉइंट है ना, नॉलेज नहीं है अबाउट लॉज की। तो वो एग्जांपल उसमें आ जाएगा। संजय बोल रहा था ना कि मतलब क्या था ना कि अननोइंगली जो एथिकल ब्रेक हो रहा है, मतलब अनएथिकल काम हो रहा है अननोइंगली, तो वो यही हो जाएगा ना जिनको लॉज की नॉलेज नहीं और वो फिर कुछ अनएथिकल काम हो जाए। ओके ओके करेक्ट वो डिस्कस कर रहे थे ना अपन, एग्जांपल पूछ रहे थे। यस ओके या so moral deprivation in larger perspective. One thing is more that हाँ बोलो कौन है मैं बोला था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, उससे क्या होती है गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली से बाहर आती है। तो वो एक बेटर तरीका है कि सिर्फ कुछ रिजर्व ही एरियाज हो जिसमें गवर्नमेंट अपने पास रखती है, तो उससे मार्केट फोर्सेस आ जाती है, एंटर कर जाती है, तो वहां पर कंपटीशन एफिशिएंसी आ जाती है बेटा, वहां पे चांसेस ऑफ द करप्शन कम हो जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म आता है बेटा। दो कंपनीज थे ना, एक जिंक का समथिंग, हिंदुस्तान जिंक, और एक होटल वाला कुछ था जो कि अटल बिहारी जी के समय में डिसइन्वेस्ट हुए थे। तो उस समय क्या सीन था, आफ्टर दे वर इन डिसइन्वेस्टमेंट they have made profits. ओके सो आई थिंक ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। मार्केट फोर्सेस अभी बोल रहे थे ना, मार्केट फोर्सेस विद रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक्चुअली ये ऐड करना मत भूलना कि मार्केट फोर्सेस होगा तो मार्केट फोर्स को अब्यूज करेगा, तो उसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए। शुड बी ब्रॉट टू प्ले वेर एवर लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस, लार्ज डिलीवरी सिस्टम्स, हाई टेक्नोलॉजी and foreign investments are involved. So regulation is must, regulatory mechanisms, and then monitoring and vigil in a like auctioning जो होती है, हाँ जो ऑक्शनिंग होती है वो थोड़ा सा वो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ई ऑक्शनिंग होनी चाहिए बेटर। करेक्ट ओके, and then monitoring and vigil in a decentralized fashion. तो again
लोकल लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी, राइट. ये हमने ब्रॉडली डिस्कस किया. शॉर्टेजेस शुड बी एलिमिनेटेड. तो ये तो पेरिनियल डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत बड़ा इशू है. शॉर्टेज हर एरिया में शॉर्टेज होता है. बी पर्सनल शॉर्टेज, जो 3F बोलते हैं ना, 3F तो यूनिवर्सल शॉर्टेज है वो. तो दैट शुड बी एलिमिनेटेड. बट आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट है रिसोर्स कंस्ट्रेंट के सिचुएशन में. थोड़ा इसलिए ब्यूरोक्रेसी शुड बी इनोवेटिव, ताकि दे कैन एड्रेस दिस शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम विद इनोवेटिव आइडियाज. एंड देन एरियाज विच अफेक्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड बी टारगेटेड ऑन प्रायोरिटी. ओके, कोई कुछ बोल रहा था क्या? विजय जी, वो जो एग्जांपल ले लीजिए ना, हमारा जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र का जो डीएम था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का केस मतलब पहले प्रेडिक्ट करके. यस, वो परफेक्ट एग्जांपल बैठता है. एंड देन targeted priority, citizen centric services should be introduced. So it should be citizen centric. Outsourcing should be promoted. हाँ, जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है तो दे शुड आउटसोर्स. एंड देन डिलीवरी सिस्टम्स इन एजुकेशन ऑल शुड बी री इंजीनियर्ड. ठीक है, तो दिस इज रेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज देखोगे तो. एंड देन मिनिस्ट्रीज विथ हाई रिस्क, ओके, शुड हैव इन फोकस इन हाउस अरेंजमेंट्स टू रिव्यू प्रोसीजर. ओके, इन हाउस अरेंजमेंट होना चाहिए टू रिव्यू. एंड देन विलेज रिकॉर्ड शुड बी एक्सेसिबल. तो आई थिंक अभी स्वामित्व चल रहा है ना, स्वामित्व स्कीम वगैरह, so land records वगैरह, I think that we can quote. And then internal supervision should be primary responsibility of head of department. Okay. अभी भी है ना, पता नहीं किसके लिए अभी. Okay. Internal supervision should be responsibility of head of department, and then there should be transaction and process audit rather than concentrating on financial audit. तो ये एक्चुअली CAG का भी रोल में many people question कि CAG is overstepping his authority position वगैरह. So it should be process audit rather than financial audit. तो process audit में सारा loopholes आ जाएगा वापस than just financial audit, because they can always manipulate the books ऐसे. Okay. And then there is no accountability on the part of auditors. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे ऑडिटर के पॉइंट में. So there is no accountability on the part of auditors. The whole function of CAG should be revamped. तो ये ब्रॉडली CAG के बारे में ही बोल रहा है. ओके, CAG अकाउंटेबिलिटी. एंड देन हाँ, ओके, खत्म हो गया ये. तो ब्रॉडली इफ यू सी वर्कशॉप नंबर 5 में दे आर टेलिंग टू रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर करप्शन. नॉलेज का लॉ सिटीजन्स के पास होना चाहिए. सो सिटीजन पर्सपेक्टिव भी हमको लाना है. ओके, सिटीजन पर्सपेक्टिव, डिप्राइवेशन, कंज्यूमरिज्म, कल्चर वाला एंगल आ गया. एंड मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट वाला एंगल दे ब्रॉट. मॉनिटरिंग भी आ गया. शॉर्टेजेस दे वर एड्रेस्ड. वल्नरेबल सेक्शन को बेटर टारगेटिंग, तो वो एम्पैथी कंपैशन वाला सीन. सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स, मिनिस्ट्री शुड विथ हाई रिस्क, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक फोकस आ गया इसमें. एंड देन विलेज रिकॉर्ड्स, इंटरनल सुपरविजन, प्रोसेस ऑडिट का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट दे आर टेलिंग. एंड देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्विकली. अरे 1 सेकंड सर, एक बार खोलना है रहा. हाँ, जो इसमें जो हर लाइन थी ना, आई थिंक अगर हमें इस ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना करप्शन के बारे में, तो वी शुड राइट ऑल दिस 7-8 पॉइंट्स, बट एट द एंड ऑफ एवरी लाइन इफ वी हैव एन एग्जांपल ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक दिख रहा है ना, विलेज रिकॉर्ड शुड बी एक्सेसिबल. करेक्ट. तो आई थिंक राजस्थान में जन सूचना पोर्टल कुछ बनाया था नया. तो पूरा आरटीए का हो गया, बट वी मस्ट टारगेट स्पेसिफिक ना विलेज रिकॉर्ड्स. अच्छा, हाँ, तो विलेज रिकॉर्ड के लिए रिसेंटली कोई स्कीम आई थी ना अभी, पीएम मोदी लॉन्च करी थी, स्वामित्व. तो हाँ, तो मतलब जस्ट ऐसा लिख दो कि विलेज रिकॉर्ड्स शुड बी एक्सेसिबल, एग्जांपल स्वामित्व स्कीम, ऐसा कुछ. तो करेक्ट. डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह. हाँ, एक्चुअली व्हाट यू सेड इज करेक्ट. ये सारा जो वर्कशॉप है ना, दिस इज लाइक मेंस का GS2 का क्वेश्चन और आंसर रहेगा, या वो कुछ सब कंपोनेंट रहेगा, और एथिक्स का भी ऐसा ही होगा. तो रिकमेंडेशन के लिए परफेक्ट पॉइंट्स है ये सब. नहीं, बट इसमें एग्जांपल नहीं है ना, तो आई थिंक वी शुड ब्रेनस्टॉर्म एंड ऐड द एग्जांपल हियर इटसेल्फ, राइट? हाँ, दैट इज पॉसिबल. करेक्ट. मतलब किसी को पता हो तो बता दो यार एग्जांपल इसके ऊपर. सब लोग सोचो जरा, कौन सा वाला पॉइंट? ये जो 4, 5, 6 पॉइंट्स है ना, इसी के ऊपर कोई पॉजिटिव एग्जांपल या फिर नेगेटिव एग्जांपल जो है कुछ आ रहा है दिमाग में, तो सोचो जरा. सीडीएस ले लो, काफी सारे में बैठ जाएगा. अब
देखो जैसे जो मॉनिटरिंग इन डिसेंट्रलाइज फैशन है ना, वो तो आई थिंक मनरेगा भी आ सकता है ना, उसके अंदर सोशल ऑडिट करते हैं, करेक्ट। तो मतलब वी कैन मेंशन उसके सामने। एक सिक्योरिटी वाला इशू है, क्या बोलते हैं आप उसे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। डिसेंट्रलाइज बोलो। नहीं पता। तो ये डिसेंट्रलाइज फैशन में अपन का जो पीडीएस सिस्टम है उसमें जो क्या मशीन का नाम क्या है जिसमें थंब का पीओएस बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक जो एक और स्कीम भी है उसके लिए। कौन सी? अरे जीपीएस लगाते हैं ट्रक्स के ऊपर वगैरह। वन नेशन वन रेशन। वो नहीं मतलब ट्रक्स के ऊपर जीपीएस लगाते हैं ऐसा कुछ। अच्छा हाँ, डिलीवरी में आरएफआईडी वाला कुछ ट्रैक कर रहे थे ना। हाँ फास्टैग, वो तो अलग हो गया था। वो अलग है। टोल टैगिंग मेनली है ईट। करेक्ट। नहीं वो तो वो जीपीएस वाला तो अलग हो गया ना, टैगिंग हो जाता है फिर से लोकेशन। करेक्ट। अच्छा मॉरल डेप्रिवेशन कोई एग्जांपल है क्या? मॉरल डेप्रिवेशन ये वही बोल रहा है ना कि इंक्रीज कंज्यूमरिज्म है, तो सारा मेटेरियलिस्टिक परस्यूट चल रहा है आउटसाइड, एंड सिविल सर्वेंट्स को लाइक दे आर नो टेम्प्टेड, तो ऐसा कुछ तो वैल्यू सिस्टम और वही इंटीग्रिटी वाला सीन है ना। हाँ, नॉट जस्ट इंटीग्रिटी, इवन वैल्यू सिस्टम और इंसेंटिव्स भी करेक्ट करना है उसके लिए। इंटीग्रिटी एग्जाम्पल बस ब्यूरोक्रेसी से दे सकते हैं या फिर अदर एस्पेक्ट भी? अरे कोई भी एक बोल दो ना नाम जो सबसे फेमस हो। जैसे आजकल मतलब मॉरल डेप्रिवेशन का ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जब से इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं तो बहुत ज्यादा लूट मचा रखा है, तो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है उनको भी मतलब वो भी विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। ये चलेगा नहीं चलेगा? फिर से थोड़ा एलेबोरेट करो। आई थिंक इसको थोड़ा हाँ बोलो। मतलब हॉस्पिटल्स में जैसे आजकल मतलब मिडिल क्लास के पास ऑलमोस्ट सभी लोगों के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हॉस्पिटल्स में ये हो गया है कि बहुत ज्यादा बिल्स आने लगे हैं जितनी जरूरत भी नहीं है। करेक्ट। तो वो जो था ना बीच में स्कीम में कहा था कि मतलब हेल्थ कार्ड सबका बनाएंगे, तो इससे यही इसका इशू था ना कि हाँ, तो इंश्योरेंस वाले को पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट जो है मतलब मॉडिफाई कर लेंगे, जिससे कस्टमर को इतना फायदा नहीं होता है। ओके। तो फिर कहना ये है कि मतलब जो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जैसे माइग्रेंट्स वर्कर्स के पास नहीं होते, या फिर जो सफाई कर्मचारी जो भी जो मिडिल क्लास से जो कम होते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, तो उनको भी विक्टिम बनना पड़ता है इनके कारण। तो वो हॉस्पिटल तो स्कीम आ गई ना? नहीं तो सब पे कवर नहीं है ना। अच्छा, कवर नहीं है, और वो इंश्योरेंस का हेल्थ कार्ड है कुछ, नेशनल हेल्थ कार्ड समथिंग। जैसे आयुष्मान भारत में मतलब अगर आपके पास 2 व्हीलर भी है तो आप नहीं कर सकते हो। करेक्ट। मतलब वो स्कीम नहीं ये कर सकते। हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर तो है सारे स्कीम्स में, वो हम बोल सकते हैं। मतलब आयुष्मान भारत में क्या बोला? तो आप बोल रहे हैं कि 2 व्हीलर वाला? हाँ ऐसा वो तो है, नहीं है ना? ये है 2 व्हीलर्स है तो वो नहीं कर सकते, पक्के मकान है तो वो नहीं कर सकते, बहुत सारे कंडीशंस है। वाह, ईडब्ल्यूएस जो पीडीएस में अभी एक इशू आया ना स्टेट में, तो बहुत सारे लोग मतलब एक्सक्लूड हो गए। कुछ स्टेट में बवाल नहीं मचा था क्या, वो याद नहीं आ रहा है। करेक्ट। झारखंड में कोई मर गए थे शायद। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली ले लिया था, ऑलमोस्ट 3 करोड़ कुछ लोग को एक्सक्लूड कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कौन से स्टेट में बस याद नहीं आ रहा है, बस बता देंगे। वो देखेंगे। ठीक है, अभी 10:50 हो गया, तो विल क्विकली मूव टू
पता नहीं बुक पर चल देंगे डायरेक्टली, बिकॉज आई थिंक एआरसी थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आज बुक पे चले जाएंगे। ओके, नाइस। Story. कॉग्निटिव बायस। अच्छा, एआरसी ने भी Cognitive bias. एआरसी ने भी करप्शन के लिए रिकमेंड किया है। हाँ बोलो। ओके ओके, कंटिन्यू। हाँ, आई थिंक जब वो नहीं, मैं एआरसी में करप्शन पे आएंगे ना, एआरसी की करप्शन के लिए करेक्ट, लेंगे उसको भी। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक कल हमने स्टॉप किया था, कौन सा था? हाँ, पेइंग ओबीसेंस, जो एमपी के फीट को टच करने का। तो नेक्स्ट आ गया डायलेमा, जो सेम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। ओके, ठीक है, पढ़ ले। पढ़ो ना। ओके, ऑन द हॉर्न्स ऑफ तुझे वो पढ़ना लो। अरे एक एक पढ़ ले, सब लोग एक एक पढ़ ले। हाँ, 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 3 लोग पढ़ लो। ओके, Okay. On the horns of a dilemma. I was soon to discover the cause of his irritation. A couple of cows owned by him were impounded by the crack team. Coming to Lucknow as a deputy administrator of the municipal corporation was quite an unusual experience after my initial stint in the badlands of eastern Uttar Pradesh. The corporation was usually run by elected representatives, but in 1985, when I joined, this practice had been discontinued. It was now being administered and managed by civil servants. I think अभी भी सब जगह ऐसे ही चलता है ना? सभी भी आईएएसी ऐड करता है ना अभी। Okay. To put things into perspective, even during British period, the Raj had permitted people's representatives to run this as well as other similar corporations. Perhaps only to demonstrate that Indians were incapable of running even such institutions democratically. करेक्ट, वो कॉर्नवालिस का था ना आर्गुमेंट। हाँ. However, over the years, these institutions and inherent challenges they posed to their administrators and managers emerged as effective learning tools for many future political leaders of the country. Okay. Coming back to my appointment at Municipal Corporation of Lucknow, the fact that I had done part of my schooling in Lucknow was somewhat beneficial, as I knew the place and some of its people. But nothing could have prepared me comprehensively enough for the corporation. It was an epitome of inefficiency, and it was also plagued by rampant corruption. Among the problems troubling the corporation, the menace of stray cattle stood out. It was not only a nuisance but a grave traffic hazard as well. There was no easy way to handle it. As a young, enthusiastic civil servant, I was just 4 years into service, who was determined to change the world. I took it upon myself to tackle this menace. A meeting was convened to discuss the various nuances of the problem. Most of the officers were of the view that this issue should best be left alone. But in those days, I followed a simple doctrine. If there is a problem, it needs to be tackled. Hence, I decided to take the bull by the horns quite literally. एक्चुअली यही है ना जनरल एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी का, इशू शुड बी लेफ्ट अलोन, तो नहीं ऐड करेंगे वो जनरल स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट। Right. A crack team was constituted to impound. याद रखेंगे ऑलवेज। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलिटी में कि व्हाई डिसीजन आर गेटिंग लेट इन डेमोक्रेसी। सो इसका भी यही रीजन दे दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्यूशन खुद पे खुद आएंगे, बस थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है। तो दैट्स व्हाई पॉलिटी में लिखा था क्लास 10th में शायद। करेक्ट, एक्चुअली ये इसका रीजन ये भी कल्चरली भी है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि टाइम हील्स ऑटोमेटिकली, तो टाइम के साथ सब चला जाता है, ऐसा कुछ हमारे माइंडसेट में है, तो वो भी है। ओके। A crack team was constituted to impound stray cattle. A shed was created separately to house them. Stiff penalties were imposed on those who allowed the domesticated cattle to loiter unintended in the streets. However, reminiscing about the sequence of events, I am sure that
The most critical problem was to build ramps in the available trucks to onboard the stray cattle. Oh, okay. The crack team got down to business as soon as the logistics arrangements were in place. The impact was immediately visible. A few newspapers reported the impact, and these efforts came in for sincere appreciations from the citizens of Lucknow. Correct. One morning, I got a call from an officer who happened to be the first collector under whom I had been trained. I remembered him as having nonchalant disposition. मतलब क्या हो गया इसका? Nonchalant. ये वही जो Not पत्ता वाला है ना, ताश के not पत्ते वाला जो हार गया not था. not caring. स्टार्टिंग में वो Okay. हाँ हाँ जो डिले किया था ना. हाँ हाँ Okay. I had indeed benefited enormously on the account of his personal indulgence to train me and the fact that he treated me like younger brother. However, he sounded trifle agitated on this occasion. I was soon to discover the cause of his irritation. A couple of cows owned by him were impounded by the crack team. आ गया dilemma. I assured him that I would look into the matter and revert to him. On enquiry, it was revealed that those cows were impounded because they were found loitering on the road. There was a penalty to be paid before they could be released. My ex-boss was already feeling offended on the account of the daring act of the crack team. There was no question of his paying the penalty. For me, it was a huge dilemma. Correct. तो it is like या उसका बॉस ही रूल को वायलेट कर दिया है. I couldn't have ordered the release without the payment of the penalty, as it would have jeopardized the entire campaign. Correct. For him, it appeared to be a routine matter of ordering a release, but for me, it was a matter of principle and its likely impact on the campaign. The issue was resolved when I volunteered to pay the penalty. Once this was done, the cows were released. My ex-boss never got to know how it was done. The campaign went on unabated. तो देखो ना कैसे मिडिल पाथ उन्होंने पे कर दिया, राइट, विदाउट इवन बॉस को भी डिडंट टेल एंड पब्लिक को भी नहीं पता चला कि मतलब लॉबी नहीं किया और काम भी हुआ. नहीं, बट इससे ये कहाँ पता लगा कि उसके बॉस ने फिर गाय को छोड़ना बंद कर दिया था. अरे वो मेरे को डाउट हो रहा है, ये कौन सा बॉस है वो, शादी वाला या फिर, क्योंकि पहले वाले शादी वाला इसका बॉस नहीं था, वो तो मतलब बॉस का भी बॉस था. फ्रेंड की कहानी थी. नहीं, वो तो बॉस का भी बॉस था. बड़ा बॉस, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी था वो. हाँ. पर उसमें तो लिखा था ना कि ये सब बात भी नहीं करता था, और यहाँ पे ये अच्छे अच्छे गुण लिख लिए. भाई ध्यान से किताब को पढ़. जो पहला डीएम था ना वो हेल्पफुल था, पर वो जल्दी शिफ्ट हो गया था. उसके बाद वो दूसरा आया था जिसकी तो बात कर रहा है. सही है. धन्यवाद. तो इस सिचुएशन में अगर वी आर कॉट इन सच केस स्टडी ना, तो वी कैन वॉलंटियर, पब्लिक को भी नहीं पता चलेगा और इसको वी कैन सॉल्व द इशू, ऐसा कुछ डायरेक्शन, मिडिल पाथ. ओके, गुड वन. नेक्स्ट चलेंगे. पढ़ूं क्या मैं? आई थिंक कोई और पढ़ो ना, एक चैप्टर एक. मैं पढ़ती हूँ. हाँ, फाइन. A divine intervention. The real challenge was how to prevent people from using each and every corner of the office as a spittoon. तुक्का आ गया. Okay. Being an intrinsic part of their social cultural ethos, it was not possible to put a ban on consuming pan. After a brief stint at the Municipal Corporation Lucknow, I joined as the additional registrar, Cooperative Society, Government of Uttar Pradesh. The office was typical government one. All possible corners of the building, including the staircase, as well as most of the walls, were stained with the telltale maroon colored spray paintings, which was the end result of chewing pan. After all, it was an integral part of the colorful and Nawabi local culture of Lucknow. Correct. The denizens of city, including the officials, were known to be... Denizen आया था क्वेश्चन एक. Okay.
including the officials, were known to be courteous, but they had this habit of spitting it out anywhere. There were many other attributes that were typical of a government office. There were voluminous files held together by the notorious red tape. But for this tape, they would have certainly fallen apart. Coming late to the office was a ride that no one wanted to give up. Its functioning was marred by a lot of political interference. D.K. Mittal had taken over as registrar just a few days before I joined the department. He was a no-nonsense kind of man who carried out his business like a true professional. The first task assigned to me was to somehow bring about a change in the upkeep of the office. Other aspects of office maintenance and functioning could be overhauled, but the real challenge was how to prevent people from using each and every corner of the office as a spittoon. Being an intrinsic part of their cultural ethos, it was not possible to put a ban on consuming pan. आई थिंक स्वच्छ भारत का बहुत बड़ा सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर. And when it seemed that we were all at our wits' ends, an idea suddenly struck that solved the problem quite miraculously. In fact, one did describe the idea as divine intervention, quite literally. We decided to have tiles with images of deities plastered in every corner, especially those locations which were deemed most suitable, probable, for the purpose of spitting. It didn't cost much, but once these tiles were installed, there was no way anyone could spit on them. PK. After all, the Almighty, in his various forms, had quite literally come down as a savior. Correct. I think same toilets में भी public यही करते हैं ना road में. इस एक कल्चर को दूसरे बड़े कल्चर से यूज किया ऐसा. करेक्ट. तो ऑलवेज ये बोल रहा था कि इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ कल्चर है बोल रहा था, तो कल्चर को यूज कर लिया, राइट. The Swachh Bharat Abhiyan launched by National Democratic Alliance government has been a success because of the focus on a change of attitude apart from creating necessary infrastructure. Back in the 1980s, there was hardly any concern for Swachhta, cleanliness. One had to come up with outlandish ideas to bring about the desired attitudinal change. After a few years and a few other instances as a government servant, I visited the Registrar Cooperative Society office building yet again out of simple curiosity. I wanted to ascertain whether the experiment had been sustained. I was gratified to find that the corners still had those tiles of deities. Consequently, the corners were still clean. There were no stains around, but the same unfortunately could not be said for the rest of the office. दूसरी जगह पे तुक्का मारने लगे. Okay. There was perhaps a need for the omnipresent Almighty to be actually depicted all over the place to keep the office clean, or some other out-of-box idea was required to sustain cleanliness. Despite all of us as a nation being aware of the famous maxim of Mahatma Gandhi of cleanliness is godliness, we are yet to figure out a way to imbibe it as a part of our national consciousness and attitude. Correct. Good one. ठीक है. संजय पढ़ लो आप. Lost stand found. पढ़ लो जिसको पढ़ना है. I can read अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो. ठीक है, मैं पढ़ूंगा. Okay. So lost and found. So if he was not given his position back, he explained in a matter of fact manner. एक minute. If he was not given his position back, he explained in a matter of fact manner. So then he would have to either go back or to drugs or commit suicide. ठीक है, देखेंगे. So it was lost and found है. Maybe पता नहीं drugs lost या found. अरे ignore करो इसको, ये आगे आएगा कहीं कहीं. Correct. So I always had the habit of reaching office half an hour ahead.
So punctuality ahead of the scheduled time since the beginning of my career. ठीक है? It was perhaps the result of discipline that my father instilled since my childhood. तो socialization भी आ गया. And during my tenure as additional registrar, cooperative societies, government of Uttar Pradesh, it was no different. The idea of coming early was a simple intention of planning for the day without being disturbed. So coming early मतलब discipline plus planning for the day ahead. After all, being a public servant who endeavored to be accessible had its own set of problems. ठीक है? It seemed like I was always pressed for time. Correct. हर बार time का shortage होता रहता. That's precisely what the initial half an hour provided me with. The space and time to think, innovate, plan, reflect without being bothered about meetings, phone calls, and visitors. Okay. And personally, I think that I did benefit immensely right through my career on this account of habit. Okay, so yes, this point is important. And then on one early winter morning in 1986, I was already at my office trying to prepare the blueprint for the day. Okay, and I was surely not expecting any visitor at that time. Yet there was someone who was desperate to meet me. Okay, कोई आ रहा था. As the orderly who normally kept a check on the visitors who had not yet arrived, this man just walked into my room. Okay, it was cold, but not cold enough to wear a glove inside the room. I was intrigued by the fact that he was wearing a glove. Okay, only on his left hand. ठीक है? He appeared confident despite a pale countenance. He requested for a few minutes of my time. Okay, I felt irritated, but had to give in. I had to give in to his persistence. Okay, what he narrated appeared quite strange to me. He had been an employee of a cooperative bank. Okay, employee of cooperative bank in a remote district, but he developed an addiction towards drug. So drug addiction, जब भी चल रहा issue, social issue आ गया. He developed an addiction towards drug. In his quest to buy drugs, when he had run out of money, he had siphoned off funds from the bank. Okay. तो पर्सनल इंटरेस्ट को वो उसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट में क्लैश हो गया. His crime was detected. Obviously, his employment was terminated. Okay. What came next truly surprised me. Oh, he wanted his job back. I wondered whether I could do anything under these circumstances. Okay. I was perplexed why he had traveled so far with such a ridiculous proposition. Okay. He could read the expression on my face. However, he carried on unfazed and went about his business to narrate the entire story. Okay. He explained how he had suffered immensely after being thrown out of the bank. Okay, job he lost and then he suffered. As he took the glove off his left hand, the misery unraveled. It was his artificial hand. Oh. He went on to explain how he lost his hand to gangrene. Okay. It was the result of injection needles he used to administer the drugs. I think the next side effect है ना drugs का. He had undergone rehabilitation for drug addiction eventually. Okay. And now he wanted to be reinstated in the bank as well. Okay, rehabilitation भी हो गया. Now I think he's free from drug addiction. If he was not given his position back, he explained in a matter of fact manner that expressed his steely conviction, then he would either go back to drugs or commit suicide. बाप रे. Okay. My experience in the administrative service was limited to just 6 years, but my gut instinct felt that he was not lying. Okay. I mean, this is called emotional intelligence, no? He's able to judge the person, ka emotion or feeling, whatever. The cause seemed genuine. The case seemed genuine. Bureaucracy is an institution inculcates in all practitioners a proclivity for risk averseness. Okay, and this was a huge risk. However, as always, I prepared to stick my neck out. Correct, as always. I asked. I think this becomes like a case study, right? Yes. So what would you guys do if you were in his place? Correct. Okay. However, बताओ सब लोग.
एक मिनट कंप्लीट कर दूंगा. However, ठीक है ठीक है. however, as always, I prepared to stick my neck out. Okay, so I asked the young man to pen down an application. Okay, the facts stated therein were then verified. Okay, facts पूरा verify कर लिया कि whether he's selling true or false on the telephone or from the concerned bank. तो back end में verification हो गया. Thereafter, I initiated a note. And took the file personally to the registrar, my boss, who was appointing authority. Okay, boss appointing authority. Okay, I narrated the whole story to him. Okay, boss को भी explain कर दिया. He looked at me incredulously. He was an extremely perceptive officer who was himself quite daring. He knew that I had no axe to grind, but he was not sure whether I was doing the right thing. Correct. बॉस को श्योर नहीं था. टू माई सरप्राइज आफ्टर अ ब्रीफ पॉज ही अप्रूव्ड माई प्रपोजल. ओके, द मैन हु हैड लॉस्ट हिज हैंड eventually found his job. Okay, so boss, see if you see, he convinced his boss. So persuasion skill आ गया उसका. For the next couple of years, there was no news from this young man. More importantly, no inquiry was initiated against me for having reinstated someone who had been a drug addict and was caught stealing. I subsequently moved out of the department. Okay, all good. Several years later, I had to take my daughter to an orthodontist. Orthodontist मतलब वही है ना? दांतों का. हाँ, correct. Orthodontist for a repair job for her crooked teeth. Okay, which she had inherited from me. Okay, most of the doctors take care of their patients. Okay, doctor ethics. However, this one appeared to be unusually indulgent. Okay, after the job was done, we asked for the amount to be paid. Okay, for his services. Correct. He simply smiled and refused to let us pay. Okay. When we insisted, he smiled again and narrated the story of the young man who had been rehabilitated. Oh, connection आ गया यहाँ पर. This young man happened to be his cousin. Oh, okay. He declined to take money from someone who had given a new lease of life to his cousin. ठीक है. तो यहाँ पर आ गया connection. As I gathered later, the young man continued to do well for himself. He had got married and settled down. One day, I received a copy of all the Prime Minister's Men. ये क्या है? All the Prime Minister's Men. Okay, it was from this young man. Okay, there was a lot to learn from this book, as from the experience I had in assisting in regaining his life. Okay, so he gave his back life something. However, I have often wondered whether it was ethical to reappoint a man who was indicted for stealing and who was also a drug addict. Also, it was ethical, or was it ethical to not pay the doctor for the services he offered? Okay. अच्छा था. Anyone wants to tell anything? 1989 में इंडिया गया था पाकिस्तान. तो दिल्ली के मतलब इंडियन से जो भी गए थे टेररिस्ट, वहाँ मैं सब टेररिस्ट बोल रहा हूँ, जो सिविलियंस, ठीक है. सो वो जहाँ भी रहे और जो भी बाजार घूमे, तो उनसे कोई एक पैसा भी नहीं लिया, ठीक है. तो इट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्रेंडलीनेस. मतलब और इंडिया हार गया था वो, मतलब सीरीज, मतलब टेस्ट तो 0-0 था और ओडीआई 2-0 से इंडिया हारा था. पर ये टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस था, इट वाज फिनोमिनल. ओके. तो आई थिंक जो भी चैप्टर्स, स्पेक्टेटर्स और क्रिकेटर्स, मतलब किससे नहीं लिया? टूरिस्ट जो थे, मतलब इंडियंस, तो स्पेक्टेटर जो गए थे मैच देखने, हाँ, उनसे कुछ पैसे नहीं देते. इट वाज इन फॉरगॉटन डायरी लिखा था, कुछ ऐसा आर्टिकल आया था. आज का चैप्टर्स बहुत रिलेवेंट थे, राइट? फॉर एग्जांपल एक क्या था, हाँ, तो कैटल का इशू. थिंक अभी भी हम देखते हैं कैटल का इशू रोड पे चलते रहते हैं. एंड देन दिस इज अबाउट पान कल्चर, प्रैक्टिकल स्वच्छ भारत का, एंड देन ड्रग एडिक्शन. ओके, ठीक है. आई थिंक ये तो लेकिन अनएथिकल था ना कि वो पैसे उसको देना. पैसे देने चाहिए था ना, मतलब ऐसे तो स्लिपरी स्लोप हो जाएगा. यही तो करप्शन की स्टार्टिंग होता है. एग्जैक्टली, इसलिए वो कंक्लूड कर रहा ना कि वाज इट एथिकल. उसके माइंड में क्वेश्चन है अभी तक भी.
पैसे नहीं दिया उन्होंने। सिंपली अनएथिकल है ये, है ना। हाँ, तो इन्होंने जिक्र कर लिया ना, जैसे वो आया था जिक्र, मतलब मान लिया कि मैंने चोरी किया है, वो जो कोऑपरेटिव वाला है, ये भी वही हिसाब से माफ किया जा सकता है। हर्ष, लेकिन अगर सामने वाला बंदा भाई लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तुमसे कि नहीं, वो ठीक है, बट हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी शॉप वाला है वो ले ही मुझे नहीं रहा है पता- बिल्कुल भी। हाँ मुझे क्या पता करें? नहीं ना, बाद में हो सकता है मुझसे कोई फेवर निकाल ले वो, इसलिए अभी नहीं ले रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है। एट दैट मोमेंट उसका ड्यूटी था कि सर्विस को रीपे करना, राइट? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके गाइस, कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा आई थिंक लेट चला गया, थोड़ा पेंडिंग भी है। ARC नहीं किया आज, कॉग्निटिव बायस भी नहीं किया, बट ठीक है, विल ट्राई टू कैच अप टुमारो। ओके ओके देन कंप्लीट करेंगे ना। ओके, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट। अरे वो क्या करे कल का एथिक्स का। हेलो विजय जी है, अभी सो जाओ। अभी ऐसा लिखना है जम्मू एंड कश्मीर पे वो 350 के 70 के बाद क्या हुआ है, पूरा 400 वर्ड लिखो लिखो, लिख के भेजो। इंटरनल इश्यूज है ना। ये आईबी वाले क्या क्या क्वेश्चन डालेंगे पता नहीं चल रहा है, 3 तो डालेंगे पक्का। यही सीन है बस। ओके ओके, सी यू गाइस, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे विजय विजय, बोलो। जो ये मीटिंग है ना रात वाला,